Good morning all. I hope you are working hard for your exam and in our chemistry syllabus we have learned this how to solve the numerical based on lime soda process. This question is normally asked every year for 8 marks. These numericals are very simple. Just you have to remember the formula and conversion factors. अब इसमें जो आपको पढ़ना है एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. बाकी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ. रिवाइज करने के लिए एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं. उस एग्जाम्पल हम देखते हैं. अ वाटर सैंपल कंटेनिंग फॉलोइंग इम्प्यूरिटीज. These impurities are calcium bicarbonate 162 ppm, magnesium bicarbonate 146 ppm and magnesium chloride 95 ppm. And in this case we have to see how to solve this one. Now in this case first of all we have to draw a table. अब ये जो टेबल आपको ड्रॉ करना है उसके लिए आपको ये कॉलम बनाने हैं. पहला कॉलम रहेगा आपका इम्प्यूरिटी का, दूसरा कॉलम रहेगा आपका क्वांटिटी विच इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल, तीसरा रहेगा कन्वर्जन फैक्टर, चौथा रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. एज वी कैलकुलेट दिस CaCO3 इक्विवेलेंट we have to make this column separately and then we have to see this impurity what they require. Either they require lime or soda, lime and soda or twice a lime. These are the things we have discussed in the classroom in details. Also we have given in notes how to determine whether we require lime and soda. For time being we will start discussion. In this case, as I said you, I have written the impurities. In first column this is given data that calcium bicarbonate, here I have written, then magnesium bicarbonate and magnesium chloride. Here next column is quantity. Here you can see that the same value in ppm which is written on this board. Calcium bicarbonate 162 ppm, magnesium bicarbonate 146 ppm, magnesium chloride 95 ppm. These are the given data. Now the next column, that is conversion factor. In this conversion factor we know that we have to take the fraction that is 100 divided by molecular weight of this impurity. In this case molecular weight of this calcium bicarbonate is how much? Just I will give you example how to calculate molecular weight. अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा atomic weight of all. So in this case calcium it having 40, then hydrogen having 1 but it is twice, that's why it will become 2. then कार्बन की होती है 12, 2 है इसलिए यहाँ पे होगा 24. उसके बाद है ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 3 है इसलिए 16 into 3 48 into this 2. So 48 into 2 आपका होता है 96. अगर मैं सभी को ऐड करता हूँ यहाँ पे ये हो गया 2 1 5 7 162. So molecular weight of calcium bicarbonate is 162. So I will put this value over here and next thing we have to multiply this fraction by given quantity. Your given quantity is also 162. Okay. Now next point, same this conversion factor we have to calculate for next impurity, that is magnesium bicarbonate. अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो फिर से 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. अगर आप इसमें इसी तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसकी वैल्यू मैग्नीशियम के एटॉमिक वेट 24 है 40 की जगह पे. अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ देन इट कम्स 146. सो यहाँ पे 146 आएगा इंटू 146. दिस इज द वेट.
अब यहाँ पे जो 100 आया है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट फॉर कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, next magnesium chloride. Again same thing we have to do. We have to use this conversion factor 100 divided by molecular weight of magnesium chloride. Magnesium 24, chlorine 35.5, that means twice, that's why 71 plus 24, it is equal to 95 into 95, that is the given quantity. Whatever is the answer for the CaCO3 equivalent. If I do this one, it will become 100. This will go, it will become 100. और ये अगर मैं इसको निकाल दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 100. Okay. So by calculation, CaCO3 equivalent for all these impurities equal to 100. Now question come, what exactly this required? Lime or soda or both the things? That we have learned in the classroom, that if impurity is calcium bicarbonate, then we require only lime. That's why I will use this value in this column. I will write down it required only lime, but it doesn't require the soda, so dash is there. Second, magnesium bicarbonate, we know that it required lime, but in twice, double quantity. That is 2L. That's why I will make it 200, and here no soda. So that is the thing. Last, magnesium chloride, that we know that for permanent hardness we require lime and soda. So I will take here 100 and 100, both the things. In this case it required lime and soda. Okay, so these are the required things. Now next step in this case is we have to do the summation of all this value. समेशन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कि इन सब को आपको ऐड करना है. अगर मैं इसको ऐड करता हूँ और नीचे लिखता हूँ, देन इट बिकम 400, यहाँ पे आएगा आपका 100. ओके, सो दैट इज द समेशन. नाउ इन दिस केस, वंस वी रीच टू दिस पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू यूज द फॉर्मूलेज. अगर आप एग्जाम में यहाँ तक सॉल्व करते हो, एक्यूरेटली सॉल्व करते हो, 8 मार्क में से आपको 4 मार्क यहीं पे मिल जाते हैं. अब आगे आपको ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले ये आपको मालूम होना जरूरी है. तो मैं फॉर्मूले लिखता हूँ. लाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाय 100 इंटू समेशन ऑफ लाइम इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ लाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 10 to the power 6. Okay. In this exam, we can see that in this example that they have not given this percentage purity of lime. Percentage of purity of lime, if it is not given, then we have to consider this as a 100. Okay, so substitute that value as a 100. Second, summation of lime, it is given, we have calculated, हम लोगों ने calculate किया है. तो आपके पास 74 by 100 इंटू आपको यहाँ पे करना पड़ेगा समेशन लाइन, ये आएगा आपका 400. यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया. और जैसे मैंने आपको बोला था, परसेंटेज प्यूरिटी अगर नहीं की है, देन वी हैव टू कंसिडर इट एज अ 100. वॉल्यूम ऑफ वाटर वो आपको पेपर में दे देंगे. जैसे कि आपको इस न्यूमेरिकल में इन्होंने दे दिया है 10,000 लीटर. ठीक है, या आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर 10,000 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो 10 to the power 6, substitute the values and solve the answer. Once you get the answer, that portion is over. वहां तक आपका एक पार्ट खत्म हो जाएगा. उसी तरह से हमको जो सोडा रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला है, जो ऊपर का फॉर्मूला है वही वैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे 174 की जगह पे 106 है. सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 106 डिवाइडेड बाय 100 इनटू समेशन सोडा. ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. 100 डिवाइडेड बाय प्यूरिटी ऑफ सोडा 100 लेनी है हमको. वॉल्यूम ऑफ वाटर 10,000 लीटर, उसको सब्स्टिट्यूट किया डिवाइडेड बाय 10 to the power 6. इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, इसका आंसर लिखो. जैसे आप आंसर लिखते हो तो इसके फॉर्मूले का 1 मार्क, प्रॉपर कैलकुलेशन के 1 मार्क, यानी यहाँ पे आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. इस फॉर्मूले के 1 मार्क सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो, यहाँ पे भी आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. तो इस तरह से अगर आप ठीक से करोगे तो आपको इस न्यूमेरिकल में 8 में से 8 मार्क मिलते हैं. नॉर्मली जब एग्जाम आती है तो यही जो इम्प्यूरिटीज है, तो ये जो आपकी इम्प्यूरिटीज है वो बदल देते हैं, इसकी क्वांटिटी बदल देती है, लेकिन जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहता है. तो आपको ध्यान देना है इस टेबल के ऊपर, आपको कैसे कॉलम बनाने हैं
कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं और किसको लाइम और सोडा लगता है। ये बात अगर आपको समझ गई तो आप आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और बचा हुआ जो न्यूमेरिकल है वहां पे आपको लाइम रिक्वायर्ड और सोडा रिक्वायर्ड इसके फॉर्मूले याद रखने। जो भी आंसर आता है यहाँ पे समेशन ऑफ लाइम रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखना है। 100 प्यूरिटी दी होती है, नहीं दी तो 100 ले लो। वॉल्यूम दिया होता है, सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है।